जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि Alcatel Lucent OS6450 और अदर मॉडल्स के अंदर सेशन प्रॉम्प्ट का नेम किस तरह से चेंज किया जाता है। एंड द सेकंड थिंग which we will see in this tutorial is how to create the user accounts. So let's log into the switch first. जो भी आपका यूजर नेम और पासवर्ड है वो आप दे के लॉग इन कर लेंगे और एज यू कैन सी राइट नाउ द सेशन प्रॉम्प्ट इज दिस वन हाइफन साइन इज देयर एंड देन देयर इज एरो की। तो हम यहाँ पे सेशन प्रॉम्प्ट में स्विच का जो है वो नाम रख सकते हैं विच एवर सूट्स यू। मैं यूजुअली रिकमेंड करता हूँ कि शो सिस्टम की कमांड में जब हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था कि हमने स्विच का नेम रखा था, तो आई यूजुअली प्रेफर टू कीप द सेम नेम इन द सेशन prompt as well. So let's see how we can do that. It's very easy. So the command is session prompt default और उसके बाद you will give inverted commas. In between these two inverted commas, we will write down the name of our switch to display on the session prompt. So we will keep the same name, which name we have put in the for the system as well. The same name we will use in the session prompt. But there is a chance कि for example एक lab switch जो name है switch का, it is possible कि आपके पास lab switch में 1 2 3 4 या नंबर ऑफ स्विचेस जो है वो इंस्टॉल्ड हैं, तो फिर आप उस हिसाब से जो है वो जो भी आपको सूट्स यू वो नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं सेशन प्रॉम्प्ट में। तो हम देते हैं यहाँ पे लैब हाइफन स्विच -1 एंड अगर आप सिस्को से फेमिलियर हैं तो हैशटैग रख सकते हैं, और अगर आप अल्काटेल का सेशन प्रॉम्प्ट डिफॉल्ट जो है वही एंड में रखना चाहते हैं तो फिर हम उसी तरह हाइफन और एरो की दे देंगे एंड जस्ट प्रेस एंटर। तो ये हमारा सेशन प्रॉम्प्ट का जो डिफॉल्ट नेम है वो अब ये हो जाएगा जो अभी हमने रखा है। तो लेट्स सी कि हमारा सेशन प्रॉम्प्ट का नेम चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। एग्जिट करेंगे और लॉग इन करते हैं दोबारा से, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, पासवर्ड and sorry, admin etc at 123. Okay, so here you can see now that my session prompt name is been changed. तो अब मैंने इसका नाम जो है वो चेंज करके लैब स्विच 1 रखा था और साथ में ये मैंने ऐड कर दिया था। ठीक है, यू कैन पुट एनीथिंग, यू कैन पुट हैश टैग और समथिंग, बट बेटर टू पुट सम करेक्टर हेयर। उससे ये फायदा होगा कि यू वुड नो ओके द नेम ऑफ द स्विच सेशन प्रॉम्प्ट इज एंडिंग हेयर, और यहाँ से आगे यू आर गोना डू द कॉन्फ़िगरेशन एंड व्हाटसोएवर। ठीक है जी। अच्छा, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप करते हैं तो यू शुड सेव द कॉन्फ़िगरेशन, एंड टू सेव द कॉन्फ़िगरेशन इन Alcatel Lucent it is very easy. I will show you the command. All you need is just to type copy running configuration flash copy running configuration. Why it is not copying? Let's see. Copy. Sorry. Write. Write. Memory. Flash. Synchro. Okay. This is the command in Alcatel Lucent to save the existing configuration that you have made. So write memory. Flash synchro. This is the command. Just press enter and it will take some time, and it will write the it will save the configuration in your working directory and the certified directory as well. So let's see if we go to show running directory now. This command shows you the running directory जिसके अंदर आपका switch is currently working. So as you can see, the running directory or the running configuration in which we are is working, and here is another directory which is like the certify or the restore status of the switch, and that is certified, and both of the directories working and the certified both are synchronized. This is very important. If you have done some configuration while
being in a working directory. And for example, if you wanna make those configurations permanent, so you should give this command write memory flash synchro, and you should see if your switch is in a synchronized status. लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपने कॉन्फ़िगरेशन कुछ की है लेकिन वो सेव नहीं की, तो फिर यहाँ पे सिंक्रोनाइज की जगह यू विल सी अनसिंक्रोनाइज्ड, और इट विल से नॉट सिंक्रोनाइज्ड. So yeah, so this is very easy step to see how to configure the session prompt, and secondly how to save the configuration as well. अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि how to create the user accounts in the Alcatel Switch. So let's see what are the by default user accounts that are being created in the switch the time you turn on the switch in the default mode. So show users, that is the command, and here you will see all the users which are being created already. So there is one user which is default, it is by default, it comes. If we go up, we will see some more users are being created. There is a username with the name SNMP version 3 which I have created for some reason. And then if you go up, so you will see the admin user as well. So the admin user is the main user which comes along with the default configuration the time you turn on the switch. And the password expiration for admin is none always. It will never expire because this is the admin username. As you can see, like the lockout timer is also set to none. And then the password bad attempts are maximum 3. How many times like the bad password is being done is been given, and after that the switch will time out for some time. So yeah, तो उसके बाद you can see like the SNMP is allowed or not. So on the admin account, SNMP is not allowed, and the console only disabled. This is something which I will tell you once we are going to when we will create the usernames, and what is the purpose of this console only is actually uh, ये आपका बेसिकली रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए होता है टू द एडमिन यूजर. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट योर एडमिन अकाउंट नॉट टू बी यूज्ड थ्रू रिमोट एक्सेस लाइक telnet, ssh or ftp or something, so you can like restrict your admin account, and it is very important you should restrict the admin account to the console level only. तो सिर्फ वो लोग जो जिनके पास console access है switch का, only those people will be able to access the switch using the admin account. सो उसके अलावा जो है वो कोई भी नहीं लॉग इन कर पाएगा एडमिन यूजर को यूज करते हुए यूजिंग द टेलनेट और अदर रिमोट एक्सेस सर्विसेज. सो या, सो लेट्स क्रिएट द यूजर. वन एक यूजर हम क्रिएट करते हैं, और वो विल एनेबल द पासवर्ड एनक्रिप्शन एज वेल ऑन ऑन टॉप ऑफ दैट यूजर अकाउंट, सिंस पासवर्ड एनक्रिप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्विचेस. कोई भी अगर प्लेन टेक्स्ट या क्लियर टेक्स्ट के अंदर अगर आपने पासवर्ड रखा हुआ, तो एनीबडी कैन find out your password. तो इसलिए it's better to have encryption enabled on your user account credentials. So let's create a user. The command is very simple. User, after that inverted commas, in between inverted commas we will create the user. For example, let's say lab user. So user, lab user, read write all password. Now we will type the password here. Again, two inverted commas in between those two inverted commas. Remember, it is very important to put the inverted commas. Otherwise, your special characters which you are putting as a username and the password will not be saved, and there will be error. So let's type the password. Let's type it switch. So user, lab user, read write all password, and the password is I am keeping as a switch. And e sorry, and then we will give the SHA. Yeah, SHA plus DES. Yeah, so this is the command. Okay, user, lab user, and this lab user is allowed to read and write in the switch what the user can read and write. All means everything. User can do everything. But remember, ये
जो यूजर होगा, दिस विल नॉट बी एक्टिंग एज अ एडमिन यूजर, रिमेंबर दैट सम configurations and the services are only allowed for the admin user. So उसके अलावा all जो लेवल 15 की आपकी होती हैं अवेलेबिलिटीज ऑफ द फीचर्स एंड टू यूज द कमांड्स, वो इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। ठीक है जी, ऑल एंड देन हमने दिया है पासवर्ड एंड वी wrote down the password and we told the switch to have SHA plus des on top of it, and that's it, enter। पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स, ये एरर मैं आपको दिखाना चाहता था। ठीक है, तो रिमेंबर आपका पासवर्ड जो है वो मिनिमम जो है वो 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। सो लेट्स मूव द पासवर्ड टू 8 कैरेक्टर्स। सो इट सेज as to write ECH 123, yeah, so now our password is switch 123 with SHA plus des encryption। Okay, so if we go to show users, sorry, show user is the command. So here you will see there is another username now, which is lab user, and it is having like the encryption that's enabled, and the other services, what is enabled and what is disabled for this particular username that you can see here। So yeah जी, इस तरह से हम यूजरनेम क्रिएट कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर आपने एसएनएमपी के लिए अलग से एक यूजर क्रिएट करना है, तो आप इसी तरह से यूजर नेम और पासवर्ड उसके क्रेडेंशियल्स क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग द सेम कमांड के यूजर एसएनएमपी यूजर और व्हाटएवर आपके केस में एसएनएमपी के भी आप कुछ भी यहाँ पे यू कैन पुट द नेम अकॉर्डिंगली, और उसके बाद रीड राइट ऑल पासवर्ड एंड आफ्टर दैट यू विल पुट द पासवर्ड एंड एसएचए प्लस डेस एंड दैट्स ओके जी। उम्मीद है कि आपको इस ट्यूटोरियल का भी फायदा हुआ होगा, और आने वाले टाइम में मजीद जो है वो अल्कटल लूसेंट के जो स्विचेस की कॉन्फ़िगरेशन के ट्यूटोरियल्स हैं वो मैं अपलोड करता जाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, and if you have any questions related to Alcatel switches, how to do the specific configuration, if you are like stuck in doing some configuration and you are unable to perform, you can write it in the comments and I will prepare a video tutorial for that one as well। Thank you so much, bye bye।